Okay, welcome back. Now let's do some kind of assessment questions and understand here how we have to approach to these questions here. So, okay, let me zoom it in and directly we move to these things. Okay, it is saying that write the code here. So first name it is taken from the user, middle name also it is taken from the user, last name also it is taken from the user. Then they are creating here object by the name my name and person, first name, middle name and last name. Now you know during creation of an object if you are passing some arguments here, so definitely you will be having a what constructor inside your class. So I would say here underscore underscore and self comma self comma, so I'll say fn first name comma last name comma sorry middle name comma last name, right? These are the three things that I'm receiving here. Okay, and now here what it is trying to print is it is trying to print my name dot middle. That means you have to print here middle, right? So if you can also see here that it is saying that create the object class person and print the only middle name of the person using the object. You have to just print the middle name. So I can say here simply like this self dot mi ddle middle is equal to what is the middle name mn, right? So how you are understanding that the name is here middle, because you can say here the object with the object I am calling dot middle. That means this middle must be present inside this person class. If this middle attribute is not present in a person class, you can't access it with a object, right? So if I will submit it now and all the test cases are passed. Okay, let's move the next one. Okay, the next question, if you can see here, the next question is saying that okay, define a class person that uses init method to initialize two attributes, first name and last name of a class. Then you have to print first name of a person and the last name, right? So what we can say here is simply you can say you are taking the first name from the user, you are taking the last name from the user. Similarly here, as in the previous question, my name is equal to person first name and last name. That means these two are coming as input, right? So this input is saved in this first name and the last name, and here you have to print the my last name. So this is not necessary here, right? No need of this one. So it is saying that my name dot first. That means this first is a attribute name that is present inside this class. That's how you can access it with the my name, right? I guess this is clear. This is same as the previous one. Over there you have to give the middle name, but here you have to print the first name. But this first you should be knowing that, because with the object I am trying to access this first. If this first is not present here anywhere, you can't print it. Getting this point? Okay, let's move to the next one. Okay, next class question is saying that define a class that uses init method. Same thing. Now this object is printing the last name. So what you will simply say here, last, it is saying that my name dot last. So what you will say here, print just you will create here constructor. Inside the constructor you will say self dot last is equal to last name. That's it. It was same as the previous one that you are having. Guys, the next question that you are having is that define a class shape that uses the init method to initialize length, width and radius of a square, rectangle and circle respectively. It is saying that also define three methods: area of square, area of rectangle and area of circle, that takes the values like L, W and R from the init method and calculate like this object of the shape. Okay, okay. Let's say here what we are having here, class shape, that means class has been defined here. Now it is saying that print 1 square, print 2 rectangle, print 3 circle. It is asking the user give me the input. Let's say if I'm saying here pass as of now, right? So let's say if it will run, now you can see here like this now 1 2 3, right? So it is asking the user give press enter 1 if you want to calculate the square, enter 2 if you want to calculate the rectangle, enter 3 if you want to calculate the area of a circle, right? So same thing is here. These are the three output lines that we are having here first. Then we are taking the input from the user, where user will tell me whether he has to calculate the square, he has to calculate the rectangle or he has to calculate the circle, right? Then if the user is giving here 1 and this one I am storing a, that means if I am checking if a is equal to 1, अगर a 1 के बराबर है तो यूजर क्या कैलकुलेट करना चाह रहा है, स्क्वायर, राइट? देन मैं यूजर से पूछ रहा हूँ गिव मी द लेंथ कि लेंथ कितनी है आपके एक साइड की, राइट? देन हियर आई एम सेइंग दैट शेप लेंथ कॉमा 0 कॉमा 0,
मीन्स व्हाट हियर ही इज डूइंग दैट ही इज कॉलिंग, यहाँ पे इस लाइन पे वो ना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है इस शेप क्लास का, right? Previously what we are doing, we are saying that obj, it is similarly like this, obj is equal to shapes, 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 then it's saying that length, 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 comma 0 comma 0, right? You can understand here this, by this line you can understand that your class name is shape, and in that shape you are having a constructor which is taking the three inputs, length 0 comma 0, right? So first thing first we will do this thing. So what I will say here is I will say something like this, क्या करूँगा, def underscore underscore init underscore underscore self self, oh sorry, I will say here self comma length comma breadth comma radius, right? lbr I will keep here, right? So then I will say here self dot length, length is equal to l, self dot breadth, breadth is equal to b, self dot dius, radius is equal to r, right? These three things I have defined. ये इस लाइन का मतलब है, राइट? अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू शेप, राइट? सो इसने यहाँ पे क्या किया है, ये नहीं लिखा है ऑब्जेक्ट इक्वल टू, तो ये वाली चीज़ आपके पास आ गई है, राइट? यहाँ पे आ गया समझ। अब हम क्या कर रहे थे, हम ऐसे कर रहे थे ना, obj डॉट एरिया, एरिया अंडरस्कोर sq ब्रैकेट, वो चीज़ ये है, राइट? एरिया स्क्वायर दिस। तो जब हमें ऐसा कोई सिनेरियो होता था तो हम क्या बोलते थे, हमारे क्लास के अंदर एक मेथड है, हमारी क्लास के अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, एरिया अंडरस्कोर स्क्वायर sq एंड विच इज़ टेकिंग सेल्फ। क्या कोई आर्गुमेंट आ रहा है यहाँ से, नहीं आ रहा है, सो देयरफॉर बाय डिफॉल्ट सेल्फ एक ही होगा, राइट? एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे आएगा, सिंस यहाँ पे इसने प्रिंट रखा है तो हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, रिटर्न। सो आई विल से रिटर्न सेल्फ डॉट लेंथ का स्क्वायर, राइट? ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर आया समझ। यहाँ पे दिस चीज़ का मतलब ये वाली चीज़ है, राइट? एंड दिस चीज़ का मतलब ये है। अब इन्होंने क्या किया, या आप ऐसे करो ना मैथमेटिक्स में, जैसे हम बोल रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट हियर, सो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट जहाँ पे ओबीजे लिखा है वहाँ पे ये डाल दो तो ये बन जाएगा शेप लेंथ कमा 0 डॉट एरिया, वही चीज़ ये है यहाँ पे, राइट? तो दैट मीन्स जब ये वाली चीज़ ये बोलेगा तो अब इसने क्या किया है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट कर रहा है। बट इफ़ यूज़र गेव हियर 2, जब आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो और उसने 2 दिया तो आपको क्या करना है, ए में 2 आया, क्या ए यानी कि 2 1 के बराबर है, नहीं, एलिफ में जाओगे। क्या ए यानी कि 2 के बराबर है, यस। गिव मी द लेंथ, गिव मी द ब्रेड्थ एंड शेप मीन्स कि सेम क्लास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स कि इस क्लास के अंदर आपके पास एक मेथड है जिसका नाम क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और जो कोई आर्गुमेंट यहाँ से नहीं ले रहा है, राइट? सो व्हाट आई विल से हियर इज आई विल से डेफ एरिया अंडरस्कोर rec and just the self here, that's it। यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न self dot length into self self dot breadth, right? that's it। now अगर यूज़र ने 3 दिया है तो a इज इक्वल टू 3, क्या a 1 के बराबर है, नहीं, यानी कि 3 2 के बराबर है, नहीं, क्या 3 3 के बराबर है, यस। सो व्हाट आई विल फाइंड हियर इज रेडियस लेंगे हम यूज़र से, एंड 0 लेंथ 0 आ रहा है, ब्रेड्थ 0 आ रहा है, रेडियस आपके पास आ रहा है, और एरिया ऑफ ए सर्कल आप फाइंड कर लो सेम वे। सो आई विल से एरिया अंडरस्कोर CIRC, दिस नेम एंड दिस नेम शुड बी सेम, ठीक है? CIR यहाँ पे भी है, CIR यहाँ पे भी है। उसके बाद आई विल कीप द ब्रैकेट्स सेल्फ, राइट? एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो आई विल से रिटर्न पाई वैल्यू इज 3.14 r यानी कि सेल्फ डॉट रेडियस, right, by r square, that's it। and if I will submit it now, check the output, all test cases are passing, right? So I hope you understood this question as well. Let's move to the next one. Okay, the question is saying that follow the given instructions to add details of the 2 bike companies by taking the input from the user, create a class company, create an instance bike 1 of a company, create another instance bike 2 of a company। पहले तो ये दो चीज़ें करते हैं, ओके? सो क्लास एक है, कंपनी, ठीक है? देन ये बोल रहा था क्रिएट द इंस्टेंस बाइक 1, सो आई विल से बाइक अंडरस्कोर 1
इज इक्वल टू कंपनी, COMPANY कंपनी, राइट। पहले तो ये बोला इसने, फिर उसने बोला बाइक 2 क्रिएट कर दो, बाइक अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू अगेन कंपनी, COMPANY कंपनी, आई विल से हियर, राइट। 2 इंस्टेंसेस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, टेक द नेम CC and on road price of a bike company as input from the user, right? Name CC and this you have to take from the user. So what I will say here is, I will say something like this. I'll say name is equal to input and here I will say कुछ देना है इनपुट के बगैर नहीं, दैट मीन्स नेम आ गया आपके पास। सेकंड आपको क्या लेना है, प्राइस, सो आई विल से ये प्राइस is equal to int input, right? Okay, यहाँ पे क्या आ रहा है, बजाज this and this then this and this, so better is, so we know here कि दो वैल्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम चेंज करें, हम लिखें name 1 this, price 1 this, name CC and price, name CC and price, so name आ गया हमारे पास, ना वो हम CC लेंगे, CC is equal to int input, right? CC is also coming as a numerical value, right? ये तो बाइक 1 का आ गया, right? अब हमें क्या लेना है, बाइक 2 का, लो अलर्ट से आपसे नेम 2 is equal to again input, you can see here, right? जैसे ये मैं लिखूँगा नेम इनपुट, पहला इनपुट दे दो तो TVS आ जाएगा, CC दे दो तो 90 आ जाएगा, प्राइस 1 बोलूँगा तो क्या आ जाएगा, 1,00,000। उसके बाद ये चीज़ें भी लेनी है, नेम 1 नेम 2 नेम 2, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा इनपुट सेम एज दिस, देन मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे CC2 इज़ इक्वल टू इंट इनपुट, यू कैन ऑल्सो डू इट यूजिंग द फॉर लूप, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, लाइक 2 बार उसको रन कर दो, और दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, एंड दिस वन इज़ ईजी वन, सो आई विल से ये प्राइस 2 is equal to int, again I will say here input, right? These are the 3 things that I will take from the user here, right? That's it. And यहाँ पे he is saying that कि आपको क्या करना है, user print the details of a bike company which has the highest CC as shown in the sample test case. तो आपको क्या करना है कि देखो जैसे ये बोल रहा है बाइक अंडरस्कोर 1.cc is greater than bike 2.cc, मीन्स कि यहाँ ऑब्जेक्ट 1 तो मैंने क्रिएट किया है, दैट इज़ बाइक 1, बाइक 2 के लिए भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दैट इज़ दिस बाइक 2, बट ये CC क्या होगा, दैट मीन्स दिस CC इज समथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन दिस क्लास, राइट? ये CC वही ना जो यहाँ पे इस क्लास में प्रेजेंट होगा, बट क्या CC प्रेजेंट है इस क्लास में, नहीं, राइट? यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट तो किया है इन्होंने, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया कंपनी 1 कंपनी 2, क्या हम इस यहाँ पे डेटा भेज रहे हैं इसको, ये नेम 1 नेम 2 या CC नेम 2 ये चीज़ें हम भेज रहे हैं इसको, इधर नहीं भेज रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ना यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना दूंगा, या आप कंस्ट्रक्टर नहीं कुछ और भी बना सकते हो, जस्ट यहाँ पे डेटा पूछा दो किसी भी तरह, समहाउ यू हैव टू लाइक दिस डेटा यू हैव टू पास इट हियर, सो मैं यहाँ पे इनिट लिखूँगा, इनिट अंडरस्कोर, सो आई विल से हियर सेल्फ कॉमा लेट्स से आई विल से हियर नेम comma CC comma price, these are the 3 things we need here, right? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, self dot name is equal to name self dot CC, why CC, because यहाँ पे CC से कंपेरिजन रहा है, CC बाइक 1 नेम, तो ये नेम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है तो यहाँ पे भी नेम में रखूँगा, बाइक 1 डॉट प्राइस मीन्स कि प्राइस यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट है तो यहाँ पे नाम भी प्राइस ही रखूँगा, सो आई विल से हियर CC and self dot price is equal to price, right? देखो अगर मैं ऐसे कुछ करूँगा, देखो यहाँ पे ना एरर आ जाएगा, एरर क्या होगा, पढ़ लो एरर, कंपनी अंडरस्कोर इनिट मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स नेम CC एंड प्राइस। अगर आप यहाँ पे देखोगे जब आप बाइक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, क्या आप यहाँ पे पास कर रहे हो कुछ, नहीं, तो इस लाइन से लाइन नंबर 11 से क्या होगा, ये वाली चीज़ ना ऑटोमेटिकली रन होगी। इफ़ ये चीज़ ऑटोमेटिकली रन हो रही है विच इज़ योर कंस्ट्रक्टर, यार कंस्ट्रक्टर आपको बोल रहा है मुझे ना नेम भी दे दो, CC भी दे दो, प्राइस भी दे दो, क्या आपने दिया है यहाँ पे, नहीं ना, दैट्स वाई इट्स थ्रोइंग एरर। तो हम क्या करेंगे, पहले एक काम कर लेंगे, पहले ना यूज़र से डेटा ही लेंगे, पहले यूज़र से डेटा ही लेंगे, तो यूज़र से डेटा लिया, यूज़र से डेटा लिया, यूज़र से डेटा लिया,
यूज़र से डेटा लिया, यूज़र से डेटा लिया, यूज़र से डेटा लिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा, बाइक अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू इनपुट, राइट, सॉरी इनपुट नहीं, कंपनी। ओके, मेरे माइंड में एक और कोड आ रहा है, सो आई विल गो विद दैट कोड एज वेल, कंपनी। एंड यहाँ पे मैं क्या लूँगा, नेम 1 देन कॉमा cc1 कॉमा प्राइस 1, price प्राइस 1, प्राइस 1, ये चीज़ मैं भेज रहा हूँ। सिमिलरली आई विल डू विद द बाइक 2 एज वेल, बाइक अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू कंपनी, COMPANY कंपनी। सो आई विल से हियर नेम 1 कॉमा cc2 comma price, price price 2, right? So if I will do it like this here, now if I will submit it, so some keys are failing here, best valued, okay, some error is also over there, NAM1 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 name2 name2, right? All test keys are passed, right? अगर ये आपको समझ आए तो फाइन है, अगर ये भी चीज़ समझ नहीं आया तो देख लो मैं क्या कर लूँगा, आई कैन डू हियर वन मोर वे, एक और वे है यहाँ पे विच आई फील लाइक कि हाँ देयर इज़ वन मोर वे। आई से हियर बाइक अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू कंपनी अगेन, COMPANY कंपनी, राइट, दिस आई कैन डू हियर। नाउ ये वाली चीज़ें ना यहाँ पे रखने के बजाय, सो व्हाट आई कैन डू हियर इज आई कैन डू दिस थिंग एज वेल, कंस्ट्रक्टर बना लूँगा, राइट। कंस्ट्रक्टर मैंने जैसे ही बना रहा है, मीन जब भी मैं यहाँ पे बाइक 1 का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एट द टाइम दिस कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली रन। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये उसी टाइम डेटा लेगा यूज़र से। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, आई विल से हियर सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू इनपुट, राइट। सो आई विल से हियर सेल्फ, सॉरी सेल्फ क्यों बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बन रहा है, राइट। उसके बाद क्या लिखना है, सो आई विल से हियर सेल्फ डॉट cc इज इक्वल टू इंट इनपुट अगेन, right, taking the input from the user. Then next one that I have to do is I will do something like this, self dot cc के बाद क्या था, price is equal to int input, right, that's it. Now if I will just run this program, still all the test cases are passed, right, means this bike 1 के लिए ये वाला अलग से एग्जीक्यूट होगा, दिस बाइक 2 के लिए ये वाली चीज़ अलग से एग्जीक्यूट होगी। तो बाइक 1B के लिए अपना बाइक 1 डॉट नेम होगा, बाइक 1 डॉट cc होगा, बाइक 1 डॉट प्राइस होगा, बाइक 2 के लिए अपना बाइक 2 डॉट नेम होगा, बाइक 2 डॉट cc होगा, बाइक 2 डॉट प्राइस होगा, राइट। सो यहाँ पे आप कंपेरिजन करो, इफ़ बाइक 1 डॉट cc मीन्स कि आप बाइक 1 के cc में देख रहे हो, क्या वो ग्रेटर देन है बाइक 2 के डॉट cc से, अगर है तो आप क्या करो, प्रिंट बाइक 1 डॉट नेम मीन्स कि जिसका हाईएस्ट प्राइस है, राइट, सॉरी जिसका हाईएस्ट cc है उसका नाम प्रिंट कर दो और उसकी प्राइस प्रिंट कर दो। अगर दिस कंडीशन फेल्स तो विल गो एल्स पार्ट में, तो ऑब्वियसली अगर बाइक 1 हाईएस्ट नहीं है विथ द cc तो बाइक 2 ही होगी। तो अकॉर्डिंगली वी आर पुटिंग द आउटपुट लाइक दिस, दैट मीन्स दिस वे इज़ ऑल्सो पॉसिबल, जो पहला वे दिखाया था वो भी पॉसिबल है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Follow the given instruction to add the details of the 3 numbers of a student's name and their skills rating in the Python language by taking the input from the user. You have to take the input from the user. First it is saying that create a class student, create an instance student1 of the class, create another instance student2 of the class students, take the name and rating in the Python language of the input as per user's input, print the name of the student who has the lowest skills rating as shown in the sample test case. Okay, so here what they are having, they are having Patrick is having the 0, Pranav is having the 5, Amibe is having the 2, right? Okay, then what they are saying, only 2 instances you have to create. Chalo, we will do it according to our way. And if you can see here, there is a one object by the name smallest, right, smallest that name, that means something like this is also happening. What is happening, something like this, smallest is equal to student, right, तभी तो you can access the name ना, right. Let's do one thing here, क्या कर लेंगे,
we have to take these three values. So let's do it with the constructor. I will say def underscore underscore name is equal to def underscore underscore init underscore underscore, and I will say a self self, right? That's it, which will take the name. So I will say here self dot name is equal to name, and then I will say here self dot, then what is the other thing that I are doing is skill rating. Okay, so I will say here self dot rating is equal to, why I am giving name here, we have to take the input from the users now. So I will say here input, that's it, and from here I will say int input. Okay, these are the second thing. So what I will do here is what can I here, now I have to create the instances. So I will say here student student1 dot 1 is equal to student students, right? This is the first one. Then I will say student 2 is equal to student, right? those students तो हमने ले लिए. Let's say third one be the smallest. Okay, then you have to print the lowest grade on the smallest. यहाँ पे तो comparison में करना पड़ेगा. So I will say here if student student 1 dot name is greater than student smallest, we have to check now. So I will say less than student, let's create it elaborately, student 2 dot name and student 1 dot name is less than smallest dot name से अगर होगा तो हम क्या करेंगे, because it is printing here the smallest name ना. So what I can say is I will say here smallest name का मैं update करूँ. I will say smallest dot name is equal to stude1 dot name, right? I can do this thing. I will say here elif student 2 dot name is less than student 1 dot name, right? And student 2 dot name is less than smallest dot name. अगर ये सीने है, since it is printing the smallest name, so तभी मैं smallest name का name change कर रहा हूँ. That's it. So I will say here smallest dot, there can be some other way as well. Smallest dot name is equal to student 2 dot name, right? Else I will say else तो करने की ज़रूरत ही नहीं है. So it will be by default this smallest dot name, right? So right, let me submit it. Okay, it is failing student student name is not defined. Oh sorry, one thing I'm doing here wrong. It's not name, we have to check with the rating. Okay, so we have to check with the ratings here, not with the names. So that was the thing I was doing wrong here. Rating, and here as well rating 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 here as well rating rating here as well rating. Okay, now if let me submit it, all test cases are passed, right? This is also possible. Another possible case can be like कुछ भी possible हो सकता है. This I find the one of the way that clicked in my mind right now, so I went with this solution. Okay, now the question is say that define a class named student using the provided structure. Initiate the student class as the name of the instance student1
ask the user to find that there is name, age and degree, and assign respect to attributes to student 1 instance and student 2 instance. Partial code is given. Okay, we'll go with the code here. So it's saying that create a class pass, that means you can't write anything within the class. जब class के अंदर pass लिखा होता है, you should understand this thing कि आप यहाँ पे class को कुछ पास नहीं कर सकते हो, राइट. सो क्रिएट ए इंस्टेंस एंड देन यहाँ पे आपको बोल रहे हो इट इज टेकिंग द नेम फ्रॉम द यूजर, एज फ्रॉम द यूजर, ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूजर, ग्रेजुएट, देन सेइंग दैट स्टूडेंट 1 डॉट नेम, स्टूडेंट 1 डॉट एज, स्टूडेंट 1 डॉट ग्रेजुएट, राइट. सो ये चीज़ आपको करना है. सो पहले बोलता है इंस्टेंस क्रिएट कर दो. तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए व्हाट विल बी द नेम ऑफ माई ऑब्जेक्ट. इफ यू विल सी हियर लाइन नंबर 14 में व्हाट saying student underscore 1 dot name means student 1 is the object of a class student. So what I will say here, stu, s is the capital, stud underscore 1 is equal to student, right. Now this becomes the object of a class या instance of a class student, right. and यहाँ पे क्या लिखा है student dot name means within this class there is a one attribute or we can say now. अब हमें तो यहाँ तो कुछ लिख नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं इंस्टेंसेस ही क्रिएट कर सकते हैं विद दिस ऑब्जेक्ट, राइट. तो पहला इंस्टेंस हम क्या करेंगे स्टूडेंट 1 डॉट नेम. तो नेम मेरा यहाँ पे है. अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ये इंस्टेंस क्रिएट करेंगे. सो व्हाट आई विल से हियर एस विल द कैपिटल stud _1 डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, राइट. एंड देन सेकंड वन इज स्टूडेंट _1 डॉट नेम क्या रखना है एज, एज इज इक्वल टू एज. जैसे आपने वो कर देते थे ना सेल्फ डॉट, ये नेम यूज़र दे रहा है, इसमें स्टोर हम कर रहे हैं, फिर यहाँ पे उसको असाइन कर रहे हैं, इसको एज यूज़र से ले रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं और असाइन कर रहे हैं स्टूडेंट 1 डॉट एज को, इंस्टेंसेस को, राइट. सो सेम थिंग आई विल से हियर स्टूडेंट _1 डॉट ग्रेजुएट, GRADUAT, graduate is equal to GRADUAT, right. That's it. Now if I submit it, all the test case pass, right. I hope you got this one as well. जब भी आपको यहाँ पे पास लिखा होता है सो अंडरस्टैंड ओवर हियर देयर दैट कि आप ना यहाँ कोड अंदर नहीं लिख सकते हो. गेटिंग दिस पॉइंट. तो आप ऐसे इंस्टेंस क्रिएट कर लो, देन ऐड से एट्रीब्यूट्स को असाइन करो या इंस्टेंस को असाइन कर दो. दैट्स मोर देन ओके. दिस इज लाइक द लास्ट वन. जैसे आपने था पहले क्या होता, फाइंड द सर्कल, फाइंड द सेमी सर्कल, फाइंड द जैसे स्फीयर. ओके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं यहाँ पे, राइट. एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए सेमीसर्कल इज पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. बस यू हैव टू डू द सेम थिंग हियर. नाउ यहाँ से आप देख लो इट इज शेप, शेप इज माई क्लास नेम, राइट. शेप आर जस्ट रेडियस पास कर रहे हैं, यहाँ पे भी रेडियस पास कर रहे हैं, यहाँ पे रेडियस पास कर रहे हैं. मीन्स कि तीनों जगह इज सेम इनपुट, यहाँ पे भी सेम इनपुट है, यहाँ पे सेम इनपुट है. एंड ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन ये यहाँ से पास कर रहा है. सो व्हाट आई विल अंडरस्टैंड हियर, यहाँ पे ना एक कंस्ट्रक्टर है डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ, राइट, कॉमा, जस्ट एक इनपुट आ रहा है दैट इज रेडियस एंड वो मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा. एंड आई विल से हियर सेल्फ डॉट रेडियस is equal to radius. That's it. and यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा एरिया ऑफ ए सर्कल पहले. सो आई विल से डेफ एरिया सर्कल का नाम क्या है AREA अंडरस्कोर CIR. इट शुड बी द सेम, राइट, अदरवाइज इट विल थ्रो एन एरर. एरिया ऑफ सर्कल and it is not taking any argument here, just the self. So I will say here return 3.14 pi r square. And I will say here self dot radius ka square, right. That's it. Then we have to create a semicircle. So I will say here def area underscore semi SEMI, right. You can check here semi, and I will keep here self. That's it. And I will say here return 3.14 into SELF self dot radius divided by 2, right. That's it. Then you have to take the surface area of a sphere. So I will say here def what's the name area SPH area underscore SPH, and I will say here self. That's it. and यहाँ पे what I will say is return
4 pi r square, so I will say 4 into 3.14 radius self dot radius radius का square, right? That's it. Now if I submit it, all my test cases are passed, one is failing. Kahe any constant is given here? A pi r square. That's it. Now all test cases are passed, right? Got it? And I hope you understood every question from this. Okay, thank you.